Supreme Court asks Samay Raina, accused of mocking disabled person, to hold charity event for them. आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है समय रैना और 4 अदर कॉमेडियंस को टू कंडक्ट 2 फंड रेजिंग इवेंट्स एवरी मंथ टू सपोर्ट ट्रीटमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। आपको बता दें, साल 2025 की शुरुआत से ही समय रैना लगातार रहे सुर्खियों में। वजह थी उनका इंडिया गॉट लेटेंट का एक कंट्रोवर्शियल एपिसोड। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड स्टैंड अप कॉमेडियन एंड कंटेंट क्रिएटर समय रैना एंड 4 other comedians to organize at least 2 fundraising events every month to contribute to a corpus meant for the treatment of persons with disabilities, including those suffering from spinal muscular atrophy. Bar and bench की माने तो the order was passed by a bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justice Jomalia Bagchi, which heard a plea filed by the Cure SMA India Foundation seeking action against online content that violates the dignity of persons with disabilities. The bench noted that Raina and other comedians Vipul Goyal, Balraj, Paramjeet Singh Ghai, Sonali Thakkar and Nishant Jagdish Tanwar had volunteered to hold such events in compliance with earlier directions of the court. They also sought permission to highlight the success stories of differentially abled individuals as part of their outreach. इन्हीं submissions को refer करते हुए कोर्ट ने कहा कि it was for the comedians to persuade persons with disabilities to join them on their platforms for awareness and fundraising efforts. उनका कहना था, we leave it to respondents 6 to 10 to persuade and invite the specially abled persons on their platforms to promote the cause of generating funds to provide timely treatment to the specially abled, including those suffering from SMA. उनका ये भी कहना था कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट इफ रिस्पोंडेंट 6 to 10 शोड सिंसियरिटी अबाउट शोइंग देयर अचीवमेंट्स, दे विल आल्सो कम ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ देयर कॉज। कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि इट एक्सपेक्टेड सच आउटरीच एफर्ट्स टू बिगिन इमीडिएटली। ये डायरेक्शंस आई हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेशंस दैट द कॉमेडियंस मेड इनसेंसिटिव रिमार्क्स अबाउट डिसेबिलिटी एंड द इमेंस फाइनेंशियल बर्डन फेस्ड बाय SMA पेशेंट्स। India's Got Latent show के दौरान ही समय रैना had referred to a 2-month-old SMA patient requiring a ₹16 crore injection. The cost of the one-time gene therapy Zolgensma, and followed it with a joke suggesting how a mother might view her husband if such an amount suddenly appeared in her bank account. The Cure SMA Foundation of India told the court that such content trivializes the struggles of families who depend entirely on public fundraising to access life-saving treatment. अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और बाकी कॉमेडियंस को भी कहा था टू इशू पब्लिक अपॉलजीज ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर रिमार्क्स।